Hello everyone, welcome to my channel. In this video we will perform an optics experiment to determine the refractive index of prism for a given color wavelength of light, that is sodium light with lambda or wavelength is equals to 5893 angstrom, with the help of a spectrometer. Let us begin with the objective of the experiment. My objective in this experiment is to determine the refractive index of material of a prism for a given wavelength of light, that is sodium light, using a spectrometer by measuring the angle of prism and the angle of minimum deviation. The apparatus required for this experiment are a spectrometer, prism, sodium vapor lamp, colorimeter, telescope, spirit level and a reading lens. Formula used: the refractive index of a prism material is given by the formula mu is equals to sin A plus del m by 2 by sin A by 2, where A is the angle of prism and del m is equals to angle of minimum deviation suffered by a ray of light on passing through the prism. The least count of the spectrometer is 20 seconds. You can see here. Now I will explain the diagrams. Diagram first, to determine angle of prism. इस डायग्राम में हम प्रिज्म का एंगल डिटरमाइन कर रहे हैं बाय यूजिंग रिफ्लेक्शन मेथड. कॉलीमीटर से पैरेलल लाइट प्रिज्म पर गिरती है. दिस इज़ अ प्रिज्म. लाइट प्रिज्म के एक फेस से रिफ्लेक्ट होती है और टेलीस्कोप से ऑब्जर्व की जाती है. फिर टेलीस्कोप को रोटेट करके दूसरी फेस से रिफ्लेक्ट रे को ऑब्जर्व करते हैं. इन दोनों टेलीस्कोप पोजीशन के बीच का एंगल मेज़र किया जाता है और इसका हाफ लेने पर एंगल ऑफ प्रिज्म मिलता है. A is the angle of prism and A is equals to theta by 2. Diagram 2, to determine angle of minimum deviation. इस डायग्राम में प्रिज्म को मिनिमम डेविएशन पोजीशन में रखा जाता है. कॉलीमीटर से निकलने वाली लाइट प्रिज्म में इंटर करती है. इंटर करके रिफ्रैक्ट होती है और दूसरी साइड से निकलती है. रिफ्रैक्ट होकर दूसरी साइड से निकलती है. टेलीस्कोप को इमर्जेंट रे पर अलाइन किया जाता है. प्रिज्म को धीरे धीरे रोटेट करने पर एक पोजीशन आती है जहां स्पेक्ट्रल लाइंस मोमेंटरली स्टॉप होकर रिवर्स होती है. यही मिनिमम डेविएशन पोजीशन है. इस पोजीशन पर एंगल मेज़र करके एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है. इन दोनों डायग्राम्स की हेल्प से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं. ऑब्जर्वेशन टेबल फर्स्ट. टू फाइंड एंगल ऑफ प्रिज्म, first we record the telescope reading for the reflected rays from the two faces of prism. From these readings we calculate the angle between the reflected position and determine the angle of prism. Here you can see the table. Observation table 2, to find the angle of minimum deviation. Next, we place the prism in the position of minimum deviation and observe the spectral lines of sodium. We record the telescope reading and can calculate the angle of minimum deviation from the difference of readings. Calculation using the measured value of angle of prism and angle of minimum deviation. Substitute in the formula to calculate the refractive index. Mu is equals to 1.89.
Result: the refractive index of a material of a given prism for a sodium light is found to be 1.89. Angle of prism A is equals to 58.78. Angle of minimum deviation D is equals to 49.02. Precautions. The precautions are: some angles of prism should be used for all observations. Position of the prism should not be disturbed for a given set of observation. So this completes the experiment. If you found this video helpful, please like, comment and subscribe for more physics practical videos. Thank you for watching.